So in this video, I will be summarizing Andrew Huberman and David Goggins podcast जो कि ऑलमोस्ट 2 घंटे और 37 मिनट्स का है। तो मैंने पूरा सुना है एंड आई गॉट these three main points from this podcast. So David Goggins talks about first of all performance without purpose. In this topic, he says that everyone has purposes. हर किसी के गोल्स हैं, मकसद हैं, पर्पस है कोई भी, लेकिन वो उनको डिफरेंट नहीं बनाता है। वॉट मेक्स देम डिफरेंट इज वॉट दे डू फॉर दैट पर्पस टू अचीव दैट गोल। देयर फॉर ही बिलीव इन परफॉर्मेंस विदाउट पर्पस। क्योंकि डेविड गोगिंस कहता है कि पर्पस कुछ भी हो सकता है। आपको फुटबॉलर बनना है, आपको क्रिकेटर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, कहीं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। हर किसी की कोई ना कोई गोल है, लेकिन वो उनको डिफरेंट नहीं बनाता है। What makes them different from others is their performance, what they do to achieve that goal. Therefore, he says you have to discipline your life and you have to create a mindset of your own to do, to work, and to get up every day with same kind of fire or motivation and perform in order to achieve things. Because there will be many days you will not want to work, but you have to work, and this is only possible with this mindset that you do that work just to perform, not for the purpose. And second point that he talks about is his stay hard philosophy. आपने देखा होगा कि भाई डेविड गोगिंस चलाता रहता है stay hard. What is exactly stay hard philosophy? So he says that इस दुनिया में काफ़ी लोग जो हैं बहुत बुरी जगह पे हैं अपनी लाइफ के किसी फेज में, जो कि बहुत बुरा है उनके लिए और वो ऑलमोस्ट हार चुके हैं। सो ही सेज दैट इन दैट मोमेंट व्हेन देयर इज नो वन गिविंग गिफ्ट्स टू यू, सपोर्टिंग यू और हेल्पिंग यू, देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू कैन डू इज स्टे हार्ड एंड आउटवर्क योर इनर वॉइस। जो आपने अपने लिमिट्स बना रखे हैं उनको तोड़ना और काम करना, आप बस यही कर सकते हैं और स्टे हार्ड रह सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट जिस पे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, जिसमें डेविड गॉगिंस को एंड्री ह्यूबरमैन बताता है एक ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में, एक ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड एंटीरियर मिड सिंगुलर कॉर्टेक्स। जो कि एंड्री ह्यूबरमैन कहता है कि भाई दिस इज ब्रेन स्ट्रक्चर which gets bigger when you do unwanted things, when you do unwanted things, जो काम आप नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी वो आप काम करते हैं, तो आपका ये ब्रेन स्ट्रक्चर जो है एंटीरियर मिड सिंगुलर कॉर्टेक्स, इट गेट्स बिगर, एंड when you stop doing that things that you don't want to do, it again shrinks. And this brain structure has a very strong relation with your willpower. Therefore, this brain structure is very small in obese people and very big in athletes, or you can say bodybuilders, etc. Because one thing, they have a very strong willpower, they do many difficult things and unwanted things to achieve their goals. And second point, he says that this brain structure, anterior midsingular cortex, gets highly activated when you move your body when you don't want to move your body. यानी कि जब आप एक्सरसाइज करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी आप उठ के एक्सरसाइज करते हैं, तो this brain structure will get bigger and it will highly help you to build a strong willpower to do those things or those type of things again and again. And when you listen to this podcast, David Goggins completely agrees with these points. Completely agrees with these points. तो आप सोच सकते हैं कि भाई डेविड गॉगिंस जैसे बंदे का विल पावर आप देख सकते हैं कि भाई वो क्या क्या काम करता है, तो उसके लिए कितना स्ट्रांग विल पावर चाहिए, और वो इन पॉइंट से सेटिस्फाई कर रहा है। और एंड्री ह्यूबरमैन जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट है, वो इन पॉइंट्स को साइंटिफिक बेसिस के साथ प्रूव कर रहा है। सो यू कैन से दैट इफ यू वांट टू बिल्ड a an unbreakable or unbelievable willpower,
you can you will have to do things that you don't want to do, and you have to do that again and again, because then this brain structure has plasticity. It will get bigger and it will shrink again. Therefore, you have to completely keep doing unwanted things to upkeep or level up your willpower. So these were the main points, and this brain structure also gives you the no days off rationale, रीजनिंग फॉर नो डेज ऑफ, यानी कि कोई भी दिन ऑफ नहीं लेना, रोज काम करना है. So this could be subjective for many people, but according to data provided on this brain structure, anterior midcingulate cortex, if you take days off, it will shrink again, and it can affect your willpower. And David Goggins is also a preacher of this philosophy that take no days off. So you can say that this brain structure has a strong relation with your willpower, and if you want to build that kind of willpower like David Goggins, Cristiano Ronaldo, or many successful people, you have to do things that you don't want to do, the unwanted things, and you have to do those things continuously again and again. So these were the three main points that I came through this podcast, and there were many points, but the video will get bigger and bigger. So you can listen to this podcast, Andrew Huberman and David Goggins podcast, which is an amazing podcast. You will learn many new things. So that's all for today. Thank you very much.